Hello, guys. Welcome to United Bedtime Talks. Woo! 4-2. I predicted it. बोला था. अच्छा Other याद नहीं judges, other याद ही नहीं panelists in the mud. हमें याद ही In नहीं है the mud. हमें तो याद ही नहीं है Record किया हुआ. मैं याद ही On नहीं है screen. ये कुछ है. नहीं मान याद हो ना हो सबके बेकार predictions. ये देखो ये होता है prediction. ऐसा कुछ नहीं है भाई याद ही नहीं है अपने को कुछ क्या बोल रहा है तू तू था भी क्या कॉल पे Wow. What a game. नॉट अ गेम What a game. मजा आ गया. यस Heavy rain. Physical. McTominay master UFC. ब्रॉक लेसनर से मिलेगा सून. वेन रूनी से इंस्पायर्ड है काफी. one thing to note that this was a perfect derby this was a Yeah. perfect derby this from start to end जो एनर्जी था ना इस गेम का was absolutely stunning क्या मजे किए मतलब देखते देखते भी भले ही ठीक है there were ups and downs no doubt but players matched each other's energy it was crazy एंड जो 2 गोल खाए ना उसमें और मजा आया. बारिश ने हाँ और मजा करवाया. एक्चुअली और बारिश वाज रिलेंटलेस कैसे ही खेले सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. नहीं किया तो यू आर नॉट यूनाइटेड फैंस. ओके यू कुड बी लीड्स यूनाइटेड फैंस नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. अब लीड्स यूनाइटेड है तो तुमको तो आदत है. तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रेगुलरली खेल रहे हो. भाई फक सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया ओ सॉरी दिस इज नॉट मेंट ये समाधि है वाइट शर्ट इट्स क्या ही कोइंसिडेंस है ये नहीं पहनना था मुझे क्या कर दिया कोई नहीं चलो ठीक कोई बात नहीं. So guys, get involved in the comments. Let's go through it. First of all, I'm very happy. Not because my prediction came true, not because this guy's prediction didn't came true. Just because we won a wonderful game. But एक दो concerns भी है. We'll do player ratings and we'll talk about it. काफी positives आज के मैच से. Concerns से ज्यादा positives आज बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से. तो let's go. Let's start with it. Let's start with our keeper, David De Gea. How would you rate him? David De Gea. Made routine saves. या फोर Made routine स्ट्रोक और saves. स्ट्राइक जो था Yeah. वो व्हाट अ सेव और रोड्रिगो के गोल में थोड़ा he got caught out and that shouldn't have been the case especially with someone like Dea but sometimes goals like these just come along man they just come along once in a while and it's really I don't know if we should kind of blame the keeper for it but still he could have done something about it rating भी दे दूं साथ में दे दो. 5 5. I'm with you. I have the same rating. मेरे हिसाब से it was a below average performance because जो miss हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था. Otherwise he made routine saves. Yeah. Decent enough. Yeah. But it's a 5. बिल्कुल Let's next talk about our right back. Aaron Massive Wan opportunity. Massive opportunity given, you know. yeah Does he warrant an opportunity in the Champions League match? Do you think कि वो start करना चाहिए instead of Dalot? no way No way. no way one-on-one के लिए ठीक है but do you think we'll require one-on-ones in our Champions League games इतना I think Atletico के against it will be more of a positional tactical game and his positioning is shit so Dalot का कौन सा अच्छा है? अच्छा नहीं है Dalot but का कौन सा अच्छा है? इससे तो better है भाई इससे तो better है I really thought we looked much more better defensively. I get it but Atletico के against with a team that will be defensively strong do we really need him or do we need Dalot? I think we need Dalot for that game. For this game I'll give Wan-Bissaka a strong 6. Strong 6. I'm with you. I'll give him a 6. But then I think he has made a good on his chance, you know. We might see him more regularly because of this. Actually ये competition चाहिए यही तो चाहिए हमको कि two players compete for a position and then
See who comes out better. I mean, there can be multiple ways of playing them together also, or I guess वो try भी हो चुका है. But there could be something there still. अभी भी potentially है. Potential. I think he made a good case for himself. So No I doubt. won't be surprised even if he starts against Atletico Madrid. हम्म, Positioning दोनों shit है, but हाँ at वही least defensively this guy looks much better. वही बट जेम्स का क्रॉस देखा था तूने ही लेट हिम गो वेरी इजीली और फिर रफीनिया का स्ट्राइक भी उसी पे आया सो ठीक है क्या बोल सकते Could be anything. Let's हैं talk about Victor Lindelof. ओ भाई I साहब think again a solid performance, wonderful run. भाई मतलब द कॉन्फिडेंस दिस गाय हैज राइट नाउ इन द वे ही इज कैरिंग द बॉल इट्स इनसेन इट्स इनसेन और सैंचो के साथ कंबाइन भी कर रहा है द मोर ही डज दैट द मोर ही विल बी बेटर बिकॉज उसमें क्या है ही हैज अ सरप्राइज फैक्टर इफ ही गोज एन अटैक which Yeah, teams don't associate with much United center backs. much better than Harry Maguire when he हाँ goes मतलब out. of course yes absolutely with the ball he's very good he's better yeah so he did decent I'll give him a 7 Seven. Okay, okay. For me, he was a 6.5. Any day, if you let in two goals, you have done some blunders. कमेंट Not आया कि नहीं अभी directly, not directly into the fault. So कमेंट there's आ a गया क्या comment. Anjana says, Pratyush bhai, me bhai ka best player was Shaw. Actually, he was for the first half. The yes way he tackled, he gave an assist. hmm. He was all over the pitch. His positioning was better for a change. Hmm. For But he first was half, he sleeping was my he was again sleeping for Rafinha's run so, so ठीक है second half. So I also made a comment in during the halftime. The next 10 minutes after the halftime are the most crucial ones, and we yeah conceded two in it. absolutely याद है मेरे को ये यही हुआ So we'll come to Shaw. Let's talk about Harry Maguire first. आज दिन है How तेरा would you आज rate him? प्रिडिक्शन भी सही किया मैच की यार ये भी सही बोल दिया हाफ टाइम के बाद सही है लगे रहो आज गुड गुड वन मिड वीक में भी ऐसा ही कुछ कर देना हाँ तो अपना शॉ का बोल रहे हो वो भी मगवायर का prediction क्या हुआ है? हाँ हाँ Wait. Let's talk about a minute about Atletico Madrid. My हम्म prediction is, if we are in the game for 150, 160 minutes, या we are going to win it very comfortably by at least two goals margin overall. यू आर ये रिपीटिंग मेरा दिस आई नो prediction है. बिल्कुल हाँ Yeah, पहले से ही है याद है मुझे हाँ yep. क्या मगवायर बोल रहे हैं अभी So अपन yes, मगवायर 7 गोल के लिए गोल के लिए goal के लिए. गोल के लिए I think we are on the same path, especially comes to when it comes to ratings. Harry हम्म Maguire was my god. फाइनली एक गोल मारा. फाइनली सो गोल हैप्पी. मारा ये सेट पीस जो गोल उसका सेलिब्रेशन था, जो उसका हाँ सेलिब्रेशन था, हाँ इट फेल्ट लाइक वर्ल्ड कप फाइनल में उसने फाइनल गोल मारा है 90 प्लस 5 मिनट्स पे और वो वर्ल्ड कप जीत गया है. भाई मैं तेरे इतना को एक बात लंबा बोलूं स्लाइड. तेरे को एक बात बोलूं मैंने एक्चुअली 10K का बेट लगाया है एक दोस्त के साथ कि मगवायर वर्ल्ड कप फाइनल में गोल मारेगा ये व्यूवर्स देखो, इस वजह से ना मेरे प्रिडिक्शन सही होते हैं और दूसरे दूसरे पैनलिस्ट के बिल्कुल सही नहीं होते हैं. ऐसे 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 रद्दी प्रिडिक्शन मारते हैं. इंग्लैंड तुमको मैं लगता है अरे फाइनल तक बहुत लॉन्ग टर्म पहुंचेगी. बेट है ये बहुत लॉन्ग टर्म बेट है ये मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये होगा फाइनल मतलब कौन सा फाइनल? वर्ल्ड क्वार्टर कप फाइनल फाइनल, कतार में भाई सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल फाइनल कतार पहुंचेगी. इंग्लैंड पहुंचेगी ब्रो इंग्लैंड ऑलवेज ये हंसता क्या फिर है यूनाइटेड ना टाइटल जीतेगी. इस हंसता साल क्या है यूनाइटेड टाइटल जीतेगी अगर इंग्लैंड फाइनल हंसने पहुंच का रही है नहीं तो. यूरो फाइनल पहुंचा ना वर्ल्ड कप भी पहुंचेगा हम इडियट फैंस है इंग्लैंड के पहुंचेंगे ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि इनको इंग्लैंड जाने मिले और कोई रीजन नहीं है. सॉरी, इंग्लैंड क्या वो कतर तो फाइनल मैं जा ही देखने रहा हूँ भाई साहब कतर का कतार और टिकट जा अलग रहे हो खरीदो मैं फाइनल जाऊंगा देखने मिले, वरना कोई रीजन नहीं है. खरीद टिकट्स लिए हैं Don't भाई fall क्यों into नहीं this जाएंगे trap. So, for me, Harry Maguire, because of the goal, he gets a 7. I या think defensively, still it was an average performance. हम्म I didn't enjoy it as much as I enjoyed it in the first half. हम्म Second half, I don't know, they crumbled. और हाँ, अगर if you are a physical player, ज्यादा बारिश होना, it's a हम्म boon for you. या क्योंकि जो टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं उनके स्किल्स होते हैं, बारिश में दे नलिफाई इट. रेन या नलिफाइज योर स्किल्स.
You Yeah. cannot do your tricks and trips, you know. But Pogba was shining. We'll come to him also. हाँ Let's हाँ talk आएंगे about Luke Shaw. Luke six fucking Shaw. 6? six. He was caught sleeping with Rafinha's run. Equalizer He के लिए has given probably. an assist. First half में he was rocking. First half में he was rocking, no doubt, no doubt. But So उसकी 6 is उसके bang side से average. goal गया. 6 is उसके side से average. goal. You think he was average? चल seven यार 6.5 दे दे. 7 6.5 is better. हाँ 6.5 7 के दे दे. लायक नहीं था. हाँ वही तो Just इसीलिए because मैं of his 6 लगा assist, था. we are going for a 6.5 for Luke Shaw. Yeah, ठीक है. उसका same defensive vulnerabilities of him and Maguire exposed yeah, again for the second goal especially. हाँ, Usual stuff from Manchester United. absolutely. Hmm. Let's come to our midfield. Hmm. Let's talk about Scott McTominay. One of his bad performances Bossed. Bad for me. performance. Yes. I didn't like in I didn't I mean physical battles के अलावा मैं देख रहा हूँ. I'm seeing what he contributes to the team overall in gameplay. ठीक है. Okay. Defensively मैं मानता हूँ. I'll give him 5 out of 5. But what he could do more with the ball in terms of movement, I give him 0 out of 5. He could have done so much more. And then I get it कि उसको yellow भी लेना था. He had to stop the players from going behind him. तो उसने वो भी किया. He played dirty too, which is okay. But I don't think we should give a positive rating for playing dirty. I'll give him bang average 5. We totally differ here. Yeah. For me, he was a 7, above average. I'll tell you Yes. why. Yeah. Defensively solid. He Hmm. was so physical. He made a mark on the game. He made an example for Manchester United players and the fans that we are fucking here. We are on the ground. और जो वो होता है ना कि एक टैकल या एक कुछ चीज ना आपके टीम को लिफ्ट करता है. That was that bang on the face of I totally get that. वो Leeds player. dirty का feel No. वो एक Let me player ही let दे me रहा था. finish. Uh, Plus, if you look at the game again, you will see some of the instances where they are trying to counter. And Scott McTominay's position, you know, if doesn't directly stop the counter, at least slows it, which is a हाँ. big plus for him for this game. जो हमेशा वो एक्सपोज होता था इस चीज के लिए, he didn't knew his positioning. आज Hmm. मुझे काफी improved लगा Interesting. for a change. हाँ ठीक है. मैं समझ सकता हूँ We'll go फिर. through the replays again and हाँ. we'll see that काफी counters में जो corners या कुछ भी होता है, his positioning really helped us in defending. Okay. So that was a big Okay. positive. That's why he's getting a 7 from my side. बढ़िया. Let's talk about the other starter in the midfield, Paul Labille Pogba. 8. 8. हम बहुत डिफर करने वाले हैं आज. Why 8? उसने his touches were good. रोनाल्डो के लिए एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी भी बनाया उसने. ड्रिबल्स अच्छे किए. He was playing pretty damn good before he was subbed. I think the sub was unfair, but it was also necessary in order to close the opposition down. But till that time, he was literally doing what he does best. That's why it. I mean, if he consistently keeps playing this way, there's. I mean, क्या बोल सकते हैं भाई? Every game will. It's very easy, to see to give him a lower rating, because he was playing so simple. When Pogba plays simple football, he's the best player on the pitch. And when he Yes. tries to outdo himself, he's shit. And he was simple. Play simple, and you get the rewards for it, which is why I give him a high rating today. Art. I won't differ a lot, Hmm. but I won't rate him as high as 8. For हाँ me, he हाँ. was a 7. अच्छा. Above average, performed Hmm. very well. Hmm. Not a lot of mistakes, so good for me. Let's come to our third midfielder. 1 goal, 1 assist. Mm, does what he does the best. 9 goals and 13 assists now this season. Bruno Fernandes. कुछ बचा नहीं है इसके बारे में बोलने को. The only thing. आज मैं थोड़े ज्यादा क्रिटिकल मूड में हूँ. I'm sorry for those on live also. रोता बहुत है यार. ये बहुत रोता है. अरे He मुझे तो tries. बहुत मजा आया. रो रहा था तो जरूरी था रेफरी के मुंह पे जाके रो. I He needs I to. get it. Somebody needs to play this game in United.
Huh, but continuously for every foul that happens on him, even if it's by taking the ball, he's stopping there and literally sulking. मेरे को नहीं पसंद ऐसे players. Honestly, ऐसा नहीं है कि I don't like. I love Bruno. Everyone loves Bruno, but sometimes he overdoes it. I mean that does not affect his rating. He's a 8 for me. But ये कम कर भाई. Get up and move on with it. That's what Premier League is all about. अरे बहुत मजा आया मेरे को, तो बहुत मजा हाँ. आया साला उनके फेस में जाके जो गलत डिसीजंस देते हैं, बिकॉज हाँ. ऑफ दिस थोड़ा बहुत तो प्रेशर क्रिएट होता है. और यू ब्रूनो नीड का टू बी इमेज इनटू ऐसा बन दिस. गया पता है he's not been given those decisions which usually a player would get in the Premier League. I agree with that, but get up and move on. आई थिंक उल्टा हुआ है. ब्रूनो ने रोना ज्यादा शुरू किया है जब से गलत डिसीजंस देना शुरू हुआ है. हाँ वो भी यू मतलब लुक एज एट एन द इट्स क्रोनोलॉजी. हाँ वही वही तो आई प्रत्युष थिंक इट्स प्रत्युष टोटली फेयर, टू फाइट इट आउट. रोना धोना, आई लव इट. आई प्रत्युष एब्सोल्युटली का लव कमेंट इट देख फ्रॉम ब्रूनो. प्रत्युष का कमेंट देख it makes so much sense. Sometimes he stays down and makes it 10 versus 11 when we are you talking about De Gea अरे or नहीं Bruno? ब्रूनो. I know. I was सॉरी referring to that goal. सॉरी सॉरी मैं क्या ही मैच था यार. मजा आ गया अलग है. So, यस एब्सोल्युटली मजा आया. ऐसा ही होना चाहिए डर्बीज. अरे loved it bro, loved it. मतलब it was a proper 90 minutes game feel हुआ. ठीक है कि finally after a long time we had a very good match. And या help me out here. People are saying Bruno रोता ज्यादा है. I want to say fuck off to him. He may be a मुझे फक ऑफ panelist, बोल but रहे fuck थे. off. मुझे Huh? फक ऑफ बोल And रहे also थे. Pratyush, मुझे फक Bruno ऑफ. needs to cry, man. He needs to be in the face. रोना चाहिए. क्यों नहीं रोना चाहिए? फाउल पे फाउल करोगे, 15 फाउल करते हो बेचारे पे, और बोल रहे हो रोएगा नहीं 5 बार. क्यों रोएगा? बिल्कुल रोएगा. रोना ही चाहिए. यार देख समटाइम्स है ना इन द प्रीमियर लीग इट्स और दीस. रोने का फायदा देखो. रोने का फायदा देखो, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा बॉल अगर नहीं आया होता ना, तो 2-2 नहीं होता. ही वुड हैव गॉट इट. अगर वो रोता ही नहीं, खड़ा हो गया होता, तो कभी चेक भी नहीं होता. चेक तो हुआ. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. दे दिया. Good. दिस Good. इज योर्स. Yeah. So for me, he was a 9. Goal and an assist. Goal and an assist. And he basically, you know, got us into the game और ओवरऑल भी and finished अनाथी off. अच्छा खेल रहा है. Finished off the ओवरऑल game. हाँ वही. और इन द टू गेम्स वी प्लेड अगेंस्ट लीड्स ही इज बीन ब्रिलियंट. Yeah. Yeah. 4 goals and 1 assist in 2 matches. Lovely. Lovely. So for me, he was a 9. Probably my man of the match for the game today. Sancho, Sancho. Let's talk about Jadon Sancho. Loving him. I'm absolutely loving him. भाई नजर क्या ना बंदा लगे. परफॉर्म कर रहा है. नजर क्या ना परफॉर्म लगे. कर रहा है बंदा. नजर ना लगे. नजर ना लगे तुझे. मीत की नजर लगे ही ना तुझे. वापस व्यूअर्स को रिमाइंड कर देता हूँ, आज का प्रेडिक्शन मेरा ही सही हुआ है और किसी का नहीं हुआ है. अरे फिर वही बात. मेरी नजर लगना पॉजिटिव है. हाँ चल ठीक है. जेडन सांचो, हाउ वुड यू रेट हिम? 9. 9. Yeah. Okay. Wow. I also think 9. this is his best game for United. I don't think it's his best game. It's right up there, but it's not his best. I think this is 40% of what he can do. I get that. Best game for United इतना till date. potential है. जी जी बिल्कुल. Not with you. Not with you here. I think one of the good ones. For me, he was an 8. I Okay. can't rate him higher than Bruno. देख Wonderful game. रहे हो इसका Wonderful बाइस game. देख रहे बहुत हो. मजा आया. बाइस देख रहे हो इसका. बाइस देख लो. सब सब देख लो. एक्सपोज हो रहा है आठ कमेंट. रेटिंग. 8 रेटिंग दिया है मैंने. ब्रूनो मेरा मैन ऑफ द मैच है. क्या क्या बायसनेस ओपिनियन है ये. देखो प्रत्युष भी 8 है. मेरे साथ प्रत्युष है, इमेजिन. हाँ ये दोनों की. अरे अरे. और गोट फूफा जी. गोट फूफा लीड्स जी. वांटेड टू प्ले अगेंस्ट यूनाइटेड इन प्रीमियर लीग. आओ खेलो अब. आई थिंक एक ही बार हुआ है ना ड्रॉ. वी हैव वन 3 times एंड ड्रॉन वंस. ऐसा Yeah, कुछ है ना इन लास्ट 2 years. they've beaten once in the one. They've beaten us once in the cup शायद. ये I वो don't 10 know. साल पहले की बात है. याद है गोल इतना दुख हुआ था. बेकफोर्ड.
इसलिए ऐसा इंग्लैंड, इनका प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड गोल में हैरी मागवायर विल स्कोर इन अ वर्ल्ड कप फाइनल फॉर इंग्लैंड। ठीक है। अगर ये ठीक है तो है भाई। ये देखो बायसनेस मेरा, इनका प्रेडिक्शन देखो, व्यूअर्स कम हो रहे हैं आपके प्रेडिक्शन की वजह से। होने दो, मारेगा वो। ओके, जेडन सांचो has done the other winger Jesse Lingard हम्म, 4। got a start after 2 years, 2 साल के बाद प्रीमियर लीग स्टार्ट मिला, 4। कुछ नहीं किया ऑफ नोट अकॉर्डिंग टू मी, एक्सेप्ट हिज एनर्जी एंड रनिंग दैट्स ही इज बीन डूइंग सिंस ही इज कम आउट ऑफ द एकेडमी। ठीक है, एक सीजन 2 सीजन अच्छा गया, वेस्ट हैम में भी अच्छा खेला, बट ही शोइंग नन ऑफ व्हाट ही इज केपेबल ऑफ हियर। एंड जितना भी चांसेस मिलता है ही शुड बी टेकिंग इट विद बोथ हैंड्स, ही शुड बी ग्रैबिंग इट बाय द थ्रोट, बट ही इज नॉट। आई वो उसमें बोल सकते हो कि मैच टाइम नहीं मिला है और ये सब नहीं मिला है। एट यूनाइटेड ये सब नहीं मिलता है, यू हैव टू कम ऑन एंड डू इट। ही कुडंट। 4। वरना सब मैं नहीं करता ज्यादा उसको। दूर नहीं हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, he was below average, didn't do हम्म, anything noticeable, या but I'll not give any United player 4 today, just ठीक है। because how we overall played, you know. So for me he हाँ was ठीक। a 5, still below average, but a 5. ओके। ठीक है। And Raxi was he on the pitch. अनुराग, ये हुई ना बात। So there's a beautiful comment here. All over, we've improved a lot under many areas. With you एब्सोल्युटली। there, completely with you there. बट एब्सोल्युटली। अपने डिफेंडर्स का ब्रेन फेड इतना है कि 1 मिनट में 2 गोल कंसीड किए। फुटबॉल का सबसे बड़ा एक क्लीशे अच्छी वो न्यूज बोला आती है ना जाता है। यूनाइटेड की, एक अच्छी न्यूज आती है ना मीत, तो 2 बुरी न्यूज साथ में आती है। ठीक है ना, तो वो हम लोग को हैबिट होनी चाहिए अभी। इट्स ओके। So are you saying that if we let's say sign a CDM, 2 बुरी न्यूज होंगी कि पॉगबा एंड मैटिच एक्सटेंड्स। ए भाई क्या बोल रहा है? मरवाएगा क्या? ये सब मत बोल। मैं तो सिर्फ एक इंस्टेंस दे रहा था। फर्स्ट गोल प्योर पूरा लक, हाँ, बट देन नो इट डाउट। शुड हैव बीन सेव्ड फॉर मी। इट शुड हैव। थोड़ा सा टच भी हो जाता कीपर का, फिंगर टिप भी वो ऊपर चला जाता, इट शुड हैव बीन सेव्ड, यू नो। And there are many times we've seen goals like this go. It's sometimes you can't do anything about it, but Yep, better yep, attempt हो सकता था। true, true. So Lingard for me was a 5. शुभ शुभ बोलो। कोशिश कर रहे हैं भाई। Anyway, let's come back to रोनाल्डो I का। was as frustrated with Ronaldo as I was with Lingard. For me, it was his one of the bad games. Hmm. Looked a little off color. He should have scored, man. He should have scored that fucking tap in. रोनाल्डो, कम ऑन रोनाल्डो ब्रो, क्या करे। ठीक है, कोई नहीं। People will say कि मतलब पीछे बॉल था, बहुत पावर जनरेट करना ये वो. रोनाल्डो, इट्स रोनाल्डो, Exactly. इट्स And he रोनाल्डो, scored over 800 goals for a reason. इट्स रोनाल्डो मैन। ही शुड हैव फकिंग buried it। ठीक है, कोई नहीं, होता है। ये लाएगा रे, ये चैंपियंस लीग में यही है अपना। Next game he's scoring एब्सोल्युटली। against Atletico Madrid. He's scoring अगेंस्ट और वो भी अगेंस्ट उनके हिज स्टेडियम पे है. अगेंस्ट घर जाके हिज अगेंस्ट मारेगा. हिज बियाच। एथलेटिको तो इसका कुत्ता दे रही Bitches. है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So how would you rate him? 5। Yeah. Exactly same score for me. Hmm. Now I want to talk about two substitutes Yeah. which changed the game, which I was calling for. I was, banging my Do head it, that Ralph. bring on Elanga. Fucking do it, Ralph. Just get them on, Ralph. Elanga ko lao, because he's a proper street footballer for me, physical, Uh, a youngster who could do it, on these conditions, in these conditions. He's built for this. yeah. मेरे हिसाब से Elanga for me feels like, he has a big future. मेरे हिसाब से this kid will go a नजर ना लगे long रे, way. नजर ना लगे भाई, नजर ना लगे, नजर ना लगे। बिल्कुल. I don't think he's another Adnan Januzaj. ठीक है. Either ऐसा कोई James और Wilson. ऐसा तो कोई और हो भी नहीं सकता रे भाई साहब। जेम्स विल्सन. ये वो मोल्ड में नहीं है,
I Ah, think I he's think he has totally a very ready for bright it. future. He's ready for it at this age. I mean, क्या come पेस on. है, क्या ही क्या बंदा पेस है है. बंदे का, glides through. Yeah, I think he yeah. should start in the Champions League round of 16. तू बहुत आगे पहुंचा रहा है अभी. मैं समझ रहा हूँ तेरी भावनाएं. चैंपियंस फाइनल. सीधा सीधा फाइनल Uh, पहुंच गया तू. करेगा करेगा. uh, फाइनल भी स्टार्ट करेगा ये. Just hold on for now. Let him develop. I agree, Pratyush. We've done a lot. We've done this with a lot of players who have been developing, put them on a pedestal, and then they've kind of got down, and we felt bad about it. But I think we are good with Elanga here. We are giving yeah, him time. Marcus Rashford survived. Hmm. ही इज डूइंग इट, ठीक है, एक Yeah. सीजन उसका ये खराब है, एंड इट्स नॉट इज यूजुअल उसका, Hmm. वरना 15-20 गोल फिर भी होता है इन हिज Yeah. एवरेज सीजन आल्सो. Yeah. तो ही True. इज नॉट एट ऑल बैड, मार्कस Hmm. रैशफोर्ड. एलांगा फॉर मी वाज आउटस्टैंडिंग. एक दो मिस्टेक किया, एक शॉट भी वो स्कोर करना चाहिए था. आई डोंट नो व्हाई ही टुक इट विद हिज लेफ्ट फुट, आने देता अक्रॉस, जूप मारता, राइट फुटर है, मस्त जाता Hmm. गोल. तो फॉर मी, Decision making ठीक है. He's still young. He's still young. आएगा वो सब. या सिखाएगा या रोनाल्डो भैया उसको. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो हाउ वुड यू रेट हिम? I'll give him 8. वाओ. Just for the effort. Just for the effort. Just for what he brings to this team. The freshness that he brings. He knows. He gets United. He knows what it takes to reach this fucking level, to be there, to play in the first team at United. जिस हिसाब से भी he's come up the ranks, and for that, along with where he's reached now, सब add up करके 8. नस्तरी है, बोल तो रहा हूँ मैं. कितनी बार बोला है. कितनी बार बोला है. For me, he was a 7. हम्म. Scored, Fair enough. was tracked back a lot. मतलब हम्म. भाई पूरे पिच पे था बंदा. बहुत इंपॉर्टेंट है Loved वो. him, मॉडर्न डे loved him. विंगर हैज टू ट्रैक बैक. अ मॉडर्न डे विंगर हैज टू ट्रैक बैक. वो अप एंड डाउन चलना ही चाहिए. इट्स और ओके. इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम. ठीक है, वो तो मॉडर्न डे फुल बैक भी हैज टू अटैक. द सेम वे वी थिंक दैट एक राइट बैक और लेफ्ट बैक शुड बी अटैकिंग एंड सपोर्टिंग द अटैक. सेम वे राइट विंगर्स एंड लेफ्ट विंगर्स शुड बी सपोर्टिंग द डिफेंस. दैट्स हाउ इट गोज. when he was not playing, recent जो 3-4 गेम हुए थे, I told everyone that he is hope. Anthony Ilanga is the hope when we were not doing well. या. कोई भी सिचुएशन में यूनाइटेड फेल्ट लाइक अ लॉस्ट कॉज थोड़े टाइम के लिए, कि क्या करेंगे क्या करेंगे, या. द वे या. वी वर ड्रॉइंग 1-1 एंड ऑल. He proved it again. Why I call him a hope, you know, why he could, be a real impact player. Now इसका ripple effect क्या है? He is in decent form, कभी भी start कर सकता है. He can also change the game bench से आके. We have seen that. We have seen that twice now. Uh, Apart from that, Sancho is in good form. या. This, gives opportunity. Lingard आज खेल लिया थोड़ा. If needed, he could be a backup player. Rashford को थोड़ा दिमाग में ठनकेगा कि भाई, my ये लोग मेरी position is जगह के लिए gone. आ रहे. या. My माय प्लेस position is इज. gone. या. या. एब्सोल्युटली. Rashford didn't get game time today. या. जगह गई है उसकी अभी. एब्सोल्युटली नो डाउट. और सही है. कोई गलत नहीं हुआ है ये. हाँ, I mean, deserved it. frankly, it's okay. Players का होता है ऐसा. He should take a time off and reflect and get back. That's what athletes do. अपने को लगता है यार from this side of the screen यार कि it's easy. It's not, man. It's not. They are prime athletes playing at the top level. It's difficult to perform, and with the pressure that comes with United, हमको भी समझना चाहिए. जो भी हम करते हैं मगवायर इन सब के लिए भी, the pressure is too much. Except the fact that वो still captain नहीं होना चाहिए. वो तो होना ही नहीं चाहिए. टीम में रहे तू, कैप्टन नहीं टीम चाहिए. में भी नहीं होना चाहिए. अरे हाँ For ठीक me, है बट the best center back has been Lindelof. ट्रू. We called it. Well done, Harry Maguire. We are proud of you, our captain. That was for you, River. Wayne Rooney class. Agreed. Man नो was डाउट. under severe pressure. But then he got his deserved criticism. It wasn't like, या people ऐसा are नहीं है just कि saying. अनवारंटेड था. इट वाज टोटली वारंटेड भाई. जो गलत है वो गलत है. बट बट क्रेडिट टू रैल्फ हियर. He gave him a chance to prove. Usually Ralph doesn't do that. Ralph doesn't fuck around here. GGMU, bro. GGMU. Rivaj. हाँ. Welcome Rivaj. हाँ, so Ralph doesn't fuck around with these things. You perform bad, you're out. ठीक है. So it's credit But to then him.
his एक man एक management that he's given if himself. you have seen one pattern with Ralph, Yeah. starting में he was giving opportunities to everyone. Hmm. वो कब का खत्म हो गया है, if anybody noticed, अब वो जो उसका वो मेन नोटिस ही नहीं स्क्वाड हुआ, है वो वो फ्रेम कर लिया ट्रांजिशन है. ही स्मूथ किया है उसने कि नोटिस ही नहीं हुआ है कि ही इज काइंड ऑफ अब सेटल्ड इट आउट. अब एक सेट उसका 15 लोगों का 16 लोगों का टीम बन गया है, जिसमें या. से सब होते हैं, चेंज होते हैं. एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. मैं बोल एंड रहा था ना, मैं आई हमेशा फील, आई कीप यूजिंग द वर्ड रिपोर्ट कार्ड बन रही है. या फाइनल या चॉइस पे होगा. एंड आई फील जैसे लिंगार्ड को आज चांस इसलिए मिला, नॉट बिकॉज ही वाज वेरी शार्प इन द ट्रेनिंग, जस्ट बिकॉज देयर आर 5 subs in Champions League and या. one of them could be Jesse Lingard in attacking positions. ट्रू. So ट्रू. इंटरेस्टिंग. we'll come to Ralf Ragnick. Before that, I want to talk about Fred. उसका rating बचा है. अरे Scored the भाई साहब, most important goal for me, which gave us the lead. You know, मतलब yeah, that's my क्या boy. ही टाइमिंग थी, क्या ही टाइमिंग थी भाई की. ये जब भी गोल मारता है इसकी टाइमिंग अच्छी ही होती है. एंड And ही हम स्कोर्ड जीतते हो इंपॉर्टेंट गोल. मैच. हाँ, वो जीतते हैं हम Yeah, मैच. बहुत yeah. बढ़िया. बहुत बढ़िया. आई गिव हिम 8. Brilliant finish. Brilliant या. finish. आई And गिव हिम build up 8. भी काफी अच्छा था. नो डाउट. और वो मतलब ठीक है, ही इज आल्सो हैड हिज क्रिटिसिज्म. अभी नो प्लेयर इज इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म एट यूनाइटेड, बट ही स्टक विद हिज वे ऑफ प्लेइंग एंड ही इज डन ओके. एंड जब इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट कर सकता है, दिस इज व्हाट आई वांट हिम टू ऐड टू हिज गेम. मीत फ्रेड But the हैज. fundamental change between Ole and Ralf Ragnick has been कि फ्रेड बहुत ऊपर खेल रहा है. एग्जैक्टली. और वो शाख्तार में भी वैसा ही खेलता था. शाख्तार में भी ही हैड दैट रोल दैट हिज पासिंग वाज एक्सीलेंट. इधर आके डिटीरियोरेट हुआ है उसका पासिंग, बट हिज थ्रू बॉल्स, हिज पासिंग, हिज विजन इज एक्सीलेंट, वाज एक्सीलेंट इन शाख्तार. इधर वो लिमिट हो गया है. सो इधर ही इज बीइंग प्लेड इन दोस boxes where he can attack or create an opportunity or score, which is good, which is a very good tactical move by Ralph, definitely. Rewaj says that it's a great booster for us for the match against Atletico Madrid. No doubt. Rewaj, I think it goes two ways. ठीक है, एक जो आपने बोला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नीडेड था. अगर आज ड्रॉ होता ना तो बहुत गंदा मेंटल स्टेट लेके जाते हैं मैच में, बहुत गंदा लेके जाते हैं. Yeah. अभी पॉजिटिव्स में शॉ है, मगवायर है, लिंडलॉफ है, एरन वन पिसाका को गेम टाइम है, लिंगार्ड को गेम टाइम है, इलांगा अनदर गोल, सेकंड गोल प्रीमियर लीग में, प्लस सैंचो के असिस्ट है. ब्रूनो, ब्रूनो important contribution again. The only player which is slightly would have made another step was Cristiano Ronaldo का another goal. दो में दो मारता तो would have made a lot of would have given a lot of confidence in the team. But Mm. 8-9 पॉजिटिव आप लेके जा रहे हो out of this match. That's one side Mm. of it. Second side Mm. of it, which I think shouldn't impact, but फिर भी Mm. I want to point it out. आज जो हम 90 मिनट खेले हैं, बहुत मेहनत करी है. उसमें से people every out of 13 players, all of them would have got a little niggles. Mm. कोई छोटा मोटा चोट चोट लगा ही होगा क्योंकि it was very very physical, very Yeah. very physical, and we have to Physical travel. and weather भी कैसा था. It's very heavy on players. वेदर इन अ वे इट वाज गुड, इट वाज रेनिंग, क्योंकि रेन में आप इतना स्टेमिना नहीं लूज करते हो जितना I आप get it, सन में but करते हो. उतना ही बॉडी को एफर्ट भी डालना पड़ता है because you kind of get heavy with ट्रेवल नहीं breathing होता है, also. हाँ. हाँ हाँ. Yeah. So we are traveling. So that's one concern I wanted to point it out here. Uh, how Raf Ragnick performed for you? We have done the player ratings. Did you rate Fred? मैंने फ्रेड को रेट किया नहीं किया है 7. अगर नहीं किया तो 7. 7. For me, he was a 8. ओके. Okay. Raf Ragnick. How आई much would थिंक you दिस rate him? दिस वी शुड आस्क द ऑडियंस. ये ऑडियंस बताए आज. बोलो भाई, Audience. कमेंट्स. कमेंट्स रेटिंग फॉर आल्फ. आओ भाई, पोपट मत करो मेरा. राल्फ इज 9. गुड सबs एंड टाइमली सबs. प्रत्युष. अनर्घ्या है अभी भी. रिवाज 9. 9. लवली. लवली. रिवाज यू स्टिल 9. वर्किंग. 8.5. 8.5. Decent. I see why they are doing that. And Pratyush has given a good reason also. Good subs and timely subs. We've been crying out loud about our
impact from the bench. At what time do you bring your players to change the game? आज सही बैठ गया वो. Even I'll give him a 9. आज के लिए तो he was I think perfect 10. Wow. Extra mark for he went to the pitch extra time. When the tempers were flaring, दौड़ के गया शांत हो जाओ रेड कार्ड नहीं लेना है, we need to win next matches also. वो That presence of was mind उसमें जरूरी है. presence Yeah, of mind. Yeah, that's why I absolutely. would give him a 10 for today's match, not Makes sense. overall. For today's Makes sense. match, he was a perfect 10. एंड जो यूनाइटेड का इशू है दैट वी आर कंसीडिंग आफ्टर हाफ टाइम, Hmm. क्या करेगा मैनेजर? हाफ टाइम पे 15 मिनट वो बैठ के समझाता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आर द मोस्ट हॉरेबल वन. I आई get it. डोंट थिंक इट्स डाउन टू द मैनेजर. It's a mentality Partially it's problem. down to him. It's a It's a mentality mentality problem. problem. Absolutely mentality problem. और ये these players are only capable of handling this, especially with the experience we have. अरे अनुभव सिंह बस्सी. अरे ठीक. he is यार ये a बहुत बहुत Liverpool fan, नेगेटिव. no? वो चलेगा, He ठीक is है. a लिवरपूल Liverpool फैंस fan. को आपको वेलकम है. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. इट्स ओके. इट्स ओके. हम जीत गए. इट्स ओके. He तुम भी also जीत गए. enjoyed a good match after a long time जिसमें मतलब रेफरीज ने ना जिताया हो. ए भाई तुम ये सब मत शुरू करो रे. ठीक है. अरे कुछ नहीं रखा इन सब में. टॉप 4 से तो बाहर होना ही है. Let's see, Anubhav. We are where Let's you see, were let's see. for 15 years trying to get into the top 4. 15 years ये It's टॉप okay. 4 मिलता था इनको. अरे हाँ हाँ थोड़ा बहुत आ ही जाते थे बट अच्छा. ठीक है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट पास्ट. फिर ये लोग बोलेंगे हम भी हिस्ट्री टॉकर्स है जो जैसे ये लोग थे. बट इट्स ओके. ओके, वी फेयर गेट दैट. इनफ. वील कैच अप दिस सून. आवर इज दिस ईयर इज आवर्स. कितने 30 साल चला हाँ अनुभव. अंडर आवर्स मैनेजमेंट. मैं बिल्कुल मैं भी मजाक कर रहा हूँ अनुभव भाई. डोंट गेट ऑफेंडेड. आई एम सो सॉरी. Under Raf's management, we played good games in comparison to Ole. Let's not go there. उसका एक basic reason is ओले का तुम worst time compare कर रहे हो राफ का good time से. जब ओले आया था, he has given us third and the second position as well. You know, decent run in Europa League final तक पहुंचा है, ठीक है. Champions League exit was very sad because इतना बुरा नहीं खेल रहे थे हम. वो group या stage difficult था, group of death था, and we almost made it. या अभी वो बस देख ब्रेन frankly फेड अगेन. speaking we fucking should have made it after the first 3 शुड games. हैव शुड हैव कम ऑन मैन. कम ऑन. वो चीज याद मत दिला मेरे को. मार्शल का वो ब्रेन फेड. मत दुख होता है भाई. वो सब दुख होता है. ये फाइनल फाइनल मत बोले. ए क्या बोल रहा है फाइनल? ऐसे नहीं चलता है. We showed a lot of character, and the most important because we came back to win the match after bottling it. It's some decision to take Pogba off and put Fred in. No doubt. That's what Ralph does. He's very clear about his way of thinking. He doesn't give a fuck. तुम्हारा प्रोफाइल क्या है, तुम कितने बड़े प्लेयर हो. He just goes with it. And रिस्क टेकर है भाई. बहुत बड़ा जुआरी है ये बंदा. बहुत बड़ा जुआरी है. उसका एक एग्जांपल देता हूँ. व्हेन वी आर डाउन या 1-1 होते हैं, ड्रॉ कर रहे, ठीक है. 1-1 इन टफ गेम्स इज अ गुड रिजल्ट समटाइम्स. Yeah, मैनेजर्स विल टेक इट, प्ले इट सेफ yeah, एंड टेक इट. yeah. वो बंदा क्या करता है पता है? उसके 4 डिफेंडर, फिर हो गया ब्रूनो पॉग्बा, और 4 अटैकर होते हैं. Yeah, yeah. वैसा द ही है प्रॉपर totally. फीफा फॉर्मेशन ऑफ 4-2-4. ही Hmm. गोस फॉर इट. और वो भी ऐसा नहीं कि लास्ट 5-10 मिनट, ही वुड गो फॉर इट फॉर 15-20-25 मिनट्स. No doubt. No doubt. इतना रिस्क ले सकता है वो बंदा. वो ऐसा ही है वो. On सोच this guy if he moves up the chain in United's hierarchy, what all is he going to change? I hope he gets the freedom. मैं चाहता हूँ उसको वो फ्रीडम मिले चेंज करने की because he has a lot of ideas. ऐसा भी नहीं है कि he doesn't know what he's doing. He knows what he's doing. So in a much higher management role, he'll be doing pretty well for us. That's the hope. चालू हो गया इनका. 20 is the number. Yes. इस साल तो नहीं आ रहा है. But ए City भाई. could bottle it. ए City भाई could मत bottle बोलो. it. कुछ बोलो ही मत. कुछ बोलो ही मत. It will be the worst day of my life the day they touch 20 bro. उससे पहले एक और बढ़ाना है चुपचाप. 2 साल में तो कर ही लो प्लीज. दर्द है दर्द. एनफील्ड पर देख लेंगे अनुभव भाई. भाई बिल्कुल. 19 पे जान खा गए मेरे दोस्त मेरी. इतना ना भाई ये सहन नहीं होगा. सहन तो बिल्कुल नहीं होगा. सिटी को बीट ही नहीं कर पाएंगे. हम्म. So I want to talk about our academy lads here. Shining light was Marcus Rashford in recent times. No doubt. एक मैच आया,
Hmm. and he has been consistent. Yep. उसके बाद उससे हाई रेटेड था ग्रीनवुड, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम. फॉर Yeah, मी let's not. he is not a Manchester United player anymore. He shouldn't be. If That's all I want to say. I mean, there are a lot to it. There is a lot to it. Let's not talk about it only. जाने दो. दुख दे दिया है उस बंदे ने, बहुत गंदा दुख दिया है मुझे. नहीं हो पाएगा मुझसे. एंथनी लांगा, न्यू बीकन. एंड ऐसा नहीं है कि दूसरे प्लेयर्स नहीं है. आई सो इलांगा wasn't rated like 40 million का अमार्ड, wasn't rated by legends like Facundo Pellistri, wasn't, uh, even the most talked about academy player before some time. There That's were when they others. come out. That's when they come out. When His there's hard no work. focus on them, they come out. नहीं ऐसा ही होता है. कहाँ पता था अपने को रैशफोर्ड इज कमिंग आउट ऑफ द एकेडमी. कहाँ पता था अपने को कि ग्रीनवुड आएगा. दोज वर नेम्स. दोज ग्रीनवुड Hey, एटलीस्ट वाज Greenwood. पब्लिसाइज्ड. Yeah, ग्रीनवुड, yeah. यस, ग्रीनवुड वाज पब्लिसाइज्ड बट रैशफोर्ड वाजंट. नहीं हुआ. आया ना. सेम वे एलांगा कैरीज अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी विद हिम एंड आई थिंक अमेजिंग रहेगा ये बंदा. टचवुड, फिंगर्स क्रॉस्ड. So, does it pave a way for academy players? And when I say academy, I just don't mean United Academy. We also mean the inorganic purchases like Ahmad and Facundo. They definitely, it's a boost for them. What Elanga is doing is a boost for them, that they'll know कि अब हम अगर हमारे इन गेम्स में परफॉर्म करेंगे, यूथ गेम्स में, there is definitely a chance that this club will give us a chance in for the senior team, because that place is up for grabs. ठीक है, that wing place is up for grabs. Even Elanga would love competition there. जिस हिसाब से वो बंदा है, he would love for a youngster to compete with him. That's what he's all about. So we should definitely try that angle. I Do you think we should get a right winger this summer? No, No, no? no. Yeah, it won't be right. I think this guy has a lot of potential. When I made a comment that his ceiling is as high as Ahmad, a few people were not ready to accept it, but for me, I think this guy is a gem. He is. You know, He is. And if you opportunities नहीं see, मिल रहा है इसको. वही और अकेडमी में भी देखो, when he played the game, the number of games he's played till now for the academy, he's been decent. He's been pretty decent. अच्छा खेला है वो. Academy But कहाँ मिला है इसको? हाँ, Who's this kid? ये भाई, ये रोनाल्डो जूनियर, सेठ जी के बेटे, सेठ जी के बेटे. I think we need to change the team for the ये background pictures. ये कोटा में घुसेगा. ये कोटा में घुसेगा. इसका कोटा में तय है. आने दो, आने दो, आने दो. आना आईएएस चाहिए, करोगे बेटा? आना चाहिए. But then जो लाइफस्टाइल उसको मिलेगा पहले से. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट रोनाल्डो जूनियर. लेट्स नॉट गो देयर. जब आएगा तब देखा जाएगा. So, important question. We discussed it for a bit when we were discussing player ratings. So, Dallo for Atletico or Bisaka? For me, Bisaka. Yes, same here. We हैं? need someone to defend. अबे पलट गए. अभी तो We बोल need रहे थे डेलो. अब देख, एथलेटिको अगर, अरे यार डिपेंड करता है यार. मेरे को भी लग रहा है बिसाका, क्यों पता है, क्योंकि हो सकता है डिफेंड करना पड़े. और डायलॉग भले ही थोड़ा कर लेगा, बट अपने को आई डोंट थिंक फर्स्ट लेग कहाँ है. अबे यूनाइटेड अबे. अबे ना, नहीं भाई, फिर वन बिसाका ही चाहिए. सेकंड लेग में डालो. सेकंड लेग में डालो. हाँ, घूम गया हूँ मैं, घूम गया हूँ, ठीक है, घूम गया हूँ मैं, बट हाँ, लेग वाइज होता है. देखो हमारे पैनलिस्ट के साथ कभी कभी ऐसा होता है, घूम जाते हैं. नहीं नहीं, And बट सही है. लॉजिक अभी I'll समझ आ keep रहा है ना मुझे. repeating. He thinks that Maguire will score in a World Cup final. ठीक है, कौन सा फीफा गेम लेके बैठे हैं पता नहीं, या कौन से नशे करते हैं वो भी पता नहीं. I'll be back. So for me, Aaron Wan-Bissaka starts because of his defensive stability. भाई बंदा घुसता है टैकल्स में, he Yeah. is there. ठीक है, 2 बार बीट होता है, अंडरस्टूड. बट डेलो की तरह 25 यार्ड दूर तो नहीं होता है, अलग प्लेनेट में टहल रहा है. ठीक है, अटैकिंग आउटपुट नहीं है. हाँ, नहीं है. नहीं डेलो नहीं, कौन वो सा असिस्ट पे असिस्ट दाग रहा है. हाँ, अगर अटैकिंग आउटपुट नहीं है तो मैं एग्री करता हूँ तेरे साथ. वो तो बिकॉज वो नहीं है, बिकॉज अटैकिंग नहीं कर पाते अपने फुल बैक्स, राइट बैक्स स्पेशली. तो अटैक नहीं कर और पाते तो जैसे डिफेंड अच्छा कर लो.
It makes sense. Yeah, Temporarily वही ठीक है. and Pogba will start. Okay, Pogba has to start. But then, if you look at the combination, अब जो लास्ट डिस्कस हो रहा था, अभी घुस के रेड कार्ड ना ले ले. कौन? Pogba शायद. Pogba ना? Pogba के लिए एनीवे. बोल रहा अच्छा, हूँ. विसाका के लिए बोल रहा अच्छा. है. नहीं नहीं भाई, मैकटोमने की बात नहीं हो रही. सो इफ वी टॉक अबाउट पॉल पॉगबा, हम्म. जिस तरीके से फ्रेड खेला है लास्ट टू गेम्स में, एंड द वे ब्रूनो हैज प्लेड, एंड द वे मैकटोमने हैज प्लेड, चार मिडफील्डर है. यू यूजुअली स्टार्ट विथ थ्री. वुड यू स्टार्ट फोर मिडफील्डर्स एंड रोनाल्डो सांचो, और व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? इस पे पूरा वीडियो यार, करेंगे हम, बट बिकॉज दिस I क्वेश्चन हैज get कम it. अक्रॉस, आई वांट टू टॉक अबाउट इट. अगर दो सीडीएम खिलाना चाहता है या टू डीप दो मिडफील्डर्स दो खिलाना चाहता है तो सीडीएम तो खेलेगा ही नहीं. दो सीडीएम तो खेलने ही नहीं वाले. भूल जाओ, वो सिस्टम पुराना तो हो फिर गया, खत्म हो गया तो है. फिर तो फिर it does not make sense. I don't think Pogba सो हु विल प्ले Pogba बट? फ्रेड Pogba will और पॉगबा? Pogba will play and Fred will play. Right. बिल्कुल. Paul Pogba's game today: 100% dribbles, 100% pass accuracy, 37 touches, 6 ground duels, 2 chances created, one big In a chance. game, in a game where it was relentlessly raining and Leeds were literally coming at our players in a It was hard so fought match. smooth. This is very good. This is very good what he's done, and he's built a But case then for himself again. substitute आके फ्रेड आके गेम जिताया है, वो and he has ठीक है played यार. equally well. आई गेट इट. ये सब भाई साहब. अरे रे रे, हटा दो, जाने दो, जाने दो, So जाने दो. Brazil over Argentina. अरे अरे नहीं भाई, बोलो नहीं. यार, डिफिकल्ट सिचुएशन है ना ये मैनेजर के लिए. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसाइड हु टू टेक बिकॉज एवरीवन हैज गिवन अ स्ट्रांग परफॉर्मेंस. मैकटोमिने, Yeah, आई डोंट, आई उसको चांस देना चाहिए कि नहीं एथलेटिको के अगेंस्ट. आई एम नॉट श्योर. आई डोंट थिंक ही विल. Mac Macto has been the one constant at आई CDM. गेट इट. उसको आई हटा के गेट इट. फ्रेड नहीं खिलाएंगे. पक्का. Guys, what do you think? तीन मिडफील्डर और तीन अटैकर कौन होंगे? लीव रोनाल्डो एंड सांचो. वी आर लेफ्ट विथ फोर पोजीशंस. गिव अस द नेम ऑफ फोर पोजीशंस. ठीक है, कौन चार खेलेंगे? योर ऑप्शंस आर फ्रेड. मैकटोमने, फ्रेड फ्रेड, खेलेगा, पक्का पॉगबा, खेलेगा. ब्रूनो. फ्रेड खेलेगा, पॉगबा एंड खेलेगा, ब्रूनो खेलेगा एंड एलांगा खेलेगा और सैंचो और रोनाल्डो. एंड सैंचो और आई रोनाल्डो. डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? What do I think? Fred has made a strong case for himself, but I would still keep the. I'll just change one player out of this. That would be Elanga for Lingard. ओके. Pogba and Bruno starts as number 8, and McTominay number 6. इंटरेस्टिंग. But अनर क्या Fred बोल का रहा है drop कि होना, it's a sad case. Fred has played very well. अब क्या करे, कोई तो जाएगा. अनर क्या बोल रहा है? सेम फॉर्मेशन खिलाना चाहिए. प्रत्युष बोल रहा है इट विल बी मकफ्रेड. इंटरेस्टिंग. ही McFred. कुड डू दैट. Oh, पॉगबा ऑन लेफ्ट विंग. अगर वो करना होता तो आज के मैच में करता ना. आज भी नहीं किया. So वो there will be a एक्चुअली, winger. But if he wanted to try out something for the Athletic, keeping the Atletico game in mind, then he's already done it. exactly. According to me, I think he's already done it in this Yeah. game. उसने वो टेस्ट कर लिया जो उसको करना था. I it will be interesting to see if he plays the same way at Atletico. So we'll get an idea कि हाँ भाई, this was just his strategy for the Atletico game to see how it goes. अनर क्या बोल रहा है? फ्रेड But आएगा तो भाई पक्का Fred, पॉगबा को ही. फ्रेड आएगा तो पक्का पॉगबा को ही बिठाना पड़ेगा. not necessarily. अगर पॉगबा को विंग्स पे खिला रहे हैं तो that could be a way out. कि सांचो एंड पॉगबा ऑन द लेफ्ट विंग एंड सांचो ऑन द राइट, और वाइस वर्सा. मतलब पॉगबा कैन प्ले ऑन द राइट एज वेल.
and we could go with Ronaldo up front. वो एक formation है, but personally I don't feel it will be that formation. Pogba will start in the middle, and it will be a very hard call, for Raf to leave Fred out of starting 11. Yeah, it will be. और difficult है. It's difficult. Yeah, very. Fred physically is not strong. So अगर आपने आज का मैच देखा, which I'm sure आपने देखा है, he was good physically, which I didn't expect from him, but he was हाँ. decent. I have Hmm. been the biggest critic of Fred. Same. No doubt. No doubt. Same here. तो जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें अच्छा लगता है. हम बहुत बड़े क्रिटिक है उसके. And the goal, my God, हाँ, loved it. कभी कभी कर देता है ये. और अच्छे स्ट्राइक्स मारता है, ऐसा नहीं है बुरे स्ट्राइक्स हम्म. मारता है. आज Yep, yep. वो धक्का दिया कि नहीं दिया ब्रूनो, मेरे को देखना पड़ेगा सेलिब्रेशन वापस. हम्म. हर बार वो फ्रेड गोल मारता है, ब्रूनो उसको गिराते रहता है. नहीं, आज नहीं गिरा है शायद. अरे एथलेटिको ही क्या बट ये. भाई एथलेटिको है. हाँ, गिरा के पीट सकते हैं उसको. नो डाउट. नो डाउट, वो लोग ऐसे ही खेलते हैं, रांटी लोग. Fair enough. ओके, पोस्ट एक मैच कमेंट है I फिर want to राल. discuss two things. I want to discuss two more things. एक commentary. I अबे want to मार. ask our viewers. आग. I want डोंट to गेट मी ask our टॉकिंग viewers. How did you find Jim Baglin's commentary? फकिंग कंट. मन कर रहा था टीवी तोड़ दूं, सही में. उसको जाके पेल दूं हैचो. सही में बॉस, सही में. फक. What do you guys think? Commentary कैसा था? Did you टट्टी. feel biased कि हम ही हैं जिनको इतना bias लगा? हद हो गई है, मतलब हद. टट्टी. इतनी घटिया कमेंट्री क्या हो रही है यार. और बेगलिन से तो एक्सपेक्टेड ही है, चलो वो तो है ही जानवर साला. दूसरा दूसरा कौन था आज. ड्रूरी था. I forgot. ड्रूरी था ना. कमेंट में बोलो शायद. जरा. ड्रूरी था. ड्रूरी से एक्सपेक्टेड नहीं होता ज्यादा, बट ही वाज ओके. ही वाज स्टिल क्रिटिकल. क्रिटिकल तो था, बट ही मेक्स इट अप. जरूरी था. आई डोंट थिंक पीपल कैन हेट हिम. बट आई हेट बेगलिन. Yeah. आई फकिंग हेट बेगलिन. मतलब क्या हद होती है भाई. If you're a professional, भाई reminds एक me. एक कमेंट आया यार. Hmm, So Ralph has said, I spoke to the referee after the game about that tackle on हाँ, Bruno before they scored हाँ. their equalizer. He said, listen, in Germany they wouldn't have asked VAR, and the referee said, quite frankly, this is why you should have had come to England. I spoke to the referee after the game. Fuck, दे दिया रे. टोचन दिया इसको. जबरदस्त. जबरदस्त राहुल. Oh my भाई God. सही है. व्हाट अ जवाब. रिवाज पूछ रहा है, who will be our center back in the Atletico game. I don't think you can drop Harry Maguire out of this. Arey, what about back three? I mean back five. नो डाउट. अगर तू बोल रहा है वरान, लिंडेलॉफ और मैग्वायर. Yeah. नहीं यार, नहीं 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 नहीं. फक नो. मेरे को सुन के ही डर लग रहा है. नहीं. नहीं. I mean, it makes sense. जब हमारी फटती है, we go to back three, जैसे हम last 15-20 मिनट में आज गए, ठीक है. And we can maybe put in Dello in that case कि back three खिला रहे हैं तो Dello and Luke Shaw mid तू समझ sorted. रहा है, एक वो जो अगर 3 सेंटर बैक्स खिलाते हैं, तो अगर इन गेम उसको टैक्टिक्स अगर चेंज करने होंगे ना, तो वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा. वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा. इफ ही सीज एन अपॉर्चुनिटी ऑन द विंग्स, he will have to still go with the 3 center backs. But who do और you वो start? That's a very important question. दो center back choose करो. चैंपियंस लीग है, Rough. तो चैंपियंस लीग वरान. एंड एंड लिंडेलॉफ. आई स्टिल But थिंक then मैग्वायर. Varane hasn't played recently. आई गेट इट. बट चैंपियंस लीग वरान, मैं थोड़ा इसमें बायस्ड हूँ. ठीक है, ही हैज एक्सपीरियंस इन हिम. ही कैन मार्शल द डिफेंस बेटर. और
बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा ही. I agree. I'm still with 4-3-3. Hmm. I just think you have to play Varane. But then Varane का cost है Lindelof, who has been our most consistent centre back this season. ना वरान लिंडेलॉफ ही खेलेंगे. और अगर मगवायर को खिलाना ही है तो 3 एट द बैक जाएंगे ही है. मगवायर खेलेगा ही. तो फिर डिफिकल्ट मगवायर डिसीजन है. खेलेगा ही. He तो scored. लिंडेलॉफ का ही जगह He खाएगा. scored. आई थिंक वरान इज अनड्रॉपेबल इन चैंपियंस लीग. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, लेकिन राल्फ कैन डू एनीथिंग ब्रो. What do you guys think? There is a chance that we'll go back three. Please कमेंट्स में comment. प्रिडिक्ट व्हाट डू यू गाइस थिंक. बैक 4 बैक 3. हम वेट कर रहे हैं. हमें चूतिया मत दिखाओ. I think show थोड़ा सा पीछे चलता है 2-4 सेकंड. अच्छा फिर ठीक है. नहीं दे रहे रे. वो भी हो गया. लीड कट गया. मैं भी बोल दिया. चल ठीक है. थैंक यू रिवाज. इसको पब्लिश कर. अभी स्क्रीन पे ला मे बी को. बचा लिया. लाज रख ली. सब भाग गए साले. थैंक यू रिवाज. थैंक यू सो मच. मुझे तो टेंशन में आ गए थे. हाँ नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहिए. So ये ले no back आया. three Pratyush is पैरों से लिख रहा no है क्या? back. इतना टाइम लगा रहा है. जब रिप्लाई मांगा तब नहीं दिया. Yep. Probably we'll go with 4-3-3. Varane and Maguire at the back. And काफी confusion है. And this is a good confusion, guys. कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि we want to drop players because they are playing decent and there are other good players, not because they've been shit. Lindelof's game, aerial duels. आज उसका एक Lindelof ने जो header जीता था, my Yeah. god, रोनाल्डो जैसा जंप मारा था उसने. Brilliant. 84% पास एक्यूरेसी. तो ये अच्छा पास एक्यूरेसी है. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज इफ आपका पास एक्यूरेसी 100% है ना, तो आप आजू बाजू में ही पास करते हो और खेल ही नहीं रहे हो. दिस इज समथिंग ही ट्राइड टुडे एंड 84 इज वेरी डिसेंट. और आगे बोलने वाला था, हटा दिया. तेरा टेबल देख रहा हूँ मैं अभी. थैंक यू. We are unbeaten in the 11 last. attempted, 7 long passes, अच्छा 9 ball recoveries, 4 clearances, 1 chance created. And he is a centre back. ब्रिलियंट. और इस बंदे को देखो. ये बंदा सर्वाइवर है. कितनी हाँ. बार इसके ऊपर एक्स का टाइम आया कि जस्ट फक हिम ऑफ. बट वी स्टक विद हिम एंड ही इज गिविंग इट बैक नाउ. सौविक क्या बोल रहा है? प्रत्युष बोल रहा है पेशेंस लाइक यू हैड अंडर रोले. भाई अब वो तो अभी क्या बोलना. जिगर अभी मेरा कोई बचा ही मार्शल नहीं. का ऑब्सेशन इतना नहीं है. मेरा मार्शल का ऑब्सेशन इतना नहीं है. एक दो शब्द बोल दूं. हॉलैंड से बंदा एक मस्त बंदा एकदम. मैनेजर है ना. हाँ अभी नहीं बोलना और कुछ. सौविक बोल रहा है वरान इज इक्वल टू सीएल प्लस मड्रिड डेवलपमेंट. गेट इट. दैट्स व्हाट द मेंटालिटी इज. वही मेंटालिटी पूरी टीम पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. दैट्स व्हाट रोनाल्डो हैज बीन ट्राइंग टू डू टू. भले ही उसके ऊपर बहुत आ जाता है एलिगेशंस के ही इज ओवरडूइंग इट. But he gets United, and Varane gets the winning mentality, so it's necessary. I wanted to talk specifically, Meet, about the table right now. If you look at Yeah. the table, Can we show the table if possible? screen share maru. हाँ मार दो. Yes. So or yep. The Hua? screen is here. Yep. It's Yes. not. So Just wanted to check. Is it visible, guys? Let us know. I think it is. Yeah, it should be. Yeah. So 46 points. Here we are right now. If you go down 6th and 7th and 8th, these guys have games in hand over us. What do you guys think? Where do we stand right now? If we are looking at a 38 game season, do you think we'll finish in the top 4? Secondly, we have been 5 games unbeaten. कभी लगा है ऐसा? Last हैं? 5 games we've been unbeaten. ये चीज दिखानी थी मुझे. We don't count FA Cup, so
या नॉट काउंट प्रीमियर लीग की बात चल रही है, टेबल भी प्रीमियर लीग का है ना. लास्ट 5 प्रीमियर लीग games we've been unbeaten, we've drawn 2, we've won 3. We are in decent form. Out in terms of results, chalo, we Hmm. are in decent form. We should carry on this momentum. Should be great. And then matches भी देख लो अगर. We move to Watford next. Then we go to City, Tottenham, and this is where our season will be defined. ये जो टाइम आ रहा है ना, ये जो टाइम आ रहा है ना मीत भाई, Hmm. ये डरावना टाइम है और ये एक्साइटिंग टाइम भी है. आई थिंक दिस डिफाइंस आवर सीजन. I don't think so. इंटरेस्टिंग I'll tell बट you आई. why. हम्म. I'll tell you why. I'll give you my हम्म. theory here. हम्म. We are ahead of Arsenal by 4 points, and we have 3 games. हम्म. Tottenham is 7 points in 3 games. I'm not Wolves 8 points, 2 games. मैं नहीं, टॉप 4 की रेस West तो Ham is चल जाने similar. दे. I'm expecting them to move up the table now. I momentum बढ़ा के I want them to move नहीं, to go what to I that feel third. is टॉटम को 7 पॉइंट कवर करना 3 मैच में इट्स अ टास्क. No doubt, no doubt, ठीक है. no सो doubt. इट विल मूव पैरेलल में. इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट यूनाइटेड हैज एन एडवांटेज जब यू ऑलरेडी हैव पॉइंट्स इन द बैग. ठीक है, अब तो इट्स Tottenham, ऑलवेज for example, एडवांटेजेस Tottenham has Burnley फॉर away, मी. Leeds away, and Everton at home. आई थिंक दे कुड ड्रॉप पॉइंट्स इन ऑल 3. या जिस हिसाब से लीड्स ने आज दिया है अपना, और बर्नली भी अच्छे फॉर्म में है, वेगोस्ट अच्छा खेल रहा है, व्हाई नॉट. ठीक है, आई फील गुड नाउ. So it could be anything. So you have हाँ. 7 points in the bag. For या. me, season defining, अगर मेरे को एक मैच पॉइंट आउट करना है, ठीक है, that would be against Arsenal. Arsenal का 6 pointer will be the season defining in terms of top 4. दोनों बार खेलना बाकी है, ट्रू. एंड इट्स कमिंग बैक टू बैक ओनली ऑलमोस्ट, राइट? आई थिंक. हाँ, आएगा ही, वैसा ही आएगा. Anurag is here. रिवाज बोल रहा है मार्च तो हमें लेने वाला है. ये रेडी है. नहीं, जैसा फॉर्म अपटर्न हुआ है, आई फील वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी. अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा पॉइंट टेबल भी इम्प्रूव होगा. आई डोंट. सो बड़े गेम्स में ना यूनाइटेड टर्न्स अप. या. And Ralph Ragnick has that mentality. He'll set us up after watching today's Leeds game. He'll set us up good. He has that brains how to go in about in good games. So first half में जैसा हुआ है final Liverpool, भाई wet dreams है Liverpool वालों के, nothing more. वो एक ही मैच में क्रैश हो जाएगा. Liverpool is not winning it again. आई होप नॉट मैन. क्या At ऐसा best, मतलब तो. they'll get a point out of us. अच्छा, देयर इज अनदर. अच्छा हाँ, 700 विन ना, वही था लैंडमार्क. Yes, लेट्स सी. there's the other thing I wanted to talk about would be skipped. It's the 700th win for Manchester United in the Premier League. 2100 fucking First time. points. First team to do so. Uh, let's not even talk about others. I think City or Liverpool का combine करना पड़ेगा for that many wins. 399 have come at Old Trafford in those 700 wins. 700 points. By the way, Atletico won their last game. हाँ. Atletico won the last game हाँ. comprehensively. I think Yeah. 3-0 ऐसा कुछ जीती. Wolves are drawing currently, so I don't think Wolves can go all the way. I think उनका defensive record has been as good as City. I don't see it sustaining, and Actually, इन्होंने they लाइनअप क्या them खेला है एथलेटिको ने. So they started with Felix and Suarez yeah. up front, Carrasco, Koke, Herrera, and Llorente, Mandava, Jimenez, Savage, and Rosalico. ग्रीजमैन को बेंच से लाए, बेंच से भी नहीं लाए, बेंच पे ही रखा है. इंटरेस्टिंग. एंड दे हैव लेस प्लेयर्स अवेलेबल. I think it will be a tough game. In any way you look at it. हाँ. मैंने पहले भी कहा है कि form doesn't really matter. If it's good, it's good. But then form इतना matter नहीं करेगा the way Atletico was playing. या. Uh, so I think it could really spur us. जो last 2 game हुए हैं, Leeds नो and the डाउट, match before नो डाउट. that, we are finally playing good.
defensive frailties हैं, but then overall our gameplay has been really really good. Yes. And me or Mudit bhai are not a huge, fans of statistics. Hmm. It's good, they give a indicator. आज का XG था, Leeds was close to 1.5 and United was close to 2.2. ठीक है, how is this a match of so close match, आधा उसका XG का फर्क है, ऐसा मैच है. Yeah. Yeah. I think the XGs are the most overrated statistic in the world. Thank you. Someone said it. Someone had to. I think the most ridiculous stat that is. Either you score or you don't. ये XG का क्या है कि मतलब नहीं नहीं तुम 30% स्कोर करते, तुम 25% स्कोर करते. मैंने पनौती I बोला, think it's बोला गोली ridiculous. का पोडेंस मारा. He's a good हाँ भाई. player. हाँ भाई, पनौती है हम. भैया आप पनौती हो, उसने स्कोर कर दिया. भैंस की आग. इतना सटल तरीके से बोल गया, बहुत प्यारा लिखा है. थैंक यू. अरे कल भी हम लाइव स्ट्रीम पे थे जब सिटी जीती, सॉरी हारी. हाँ. दुख. रिवाज कभी डिवोर्स विवोर्स करना हो तो हमारी स्ट्रीम पे आ जाना कभी. ऑलवेज वेलकम रिवाज. रीति भी साथ में लाई हो. So guys, I think that's the last thing I want to mention. We have just started. ठीक है, it's been roughly 10 days we have started. We have close to 100 subscribers. 200 subscriber पे we are giving away 2002 Beckham का jersey player edition. So I think it's a giveaway. So आपको कुछ करना नहीं है. You just have to subscribe. गिविंग. So when we'll reach 200 subscribers, we are giving it away for free. ओके, तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड वन ऑफ द रैंडम विनर्स विल बी चोजन. हमारे दोस्त में से कोई चूज नहीं होगा, हाँ भाई. रैंडमली होगा. डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा नहीं होगा. So don't worry about it. Get involved. I want to mention a few things here. So in 10 days we have more than 1000 views on YouTube. We don't even have 10 videos yet, still we have more than 1000 views. Overall हमारा जो reels and stuff and all सब हम गिने, it's close to 9000 views in 10 days. And हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ ये सब, because we are not like other Yes. YouTube channels who hide Yes, stuff. and the most important one. So I think 4 to 5 people have already made their debut on a live podcast जो जिंदगी में कभी किए नहीं है. Huge lifelong United fans. Yesterday, Rutvij joined us, who has interviewed players like Sunil Chetri, बहुत players अच्छा. like David James. बहुत अच्छा बोल. So it was his first debut on live YouTube. We have had few more people who for the first time went on camera and did a show. So if you want to come here, want to talk about Manchester United, or even if you are a rival fan and someday you want to talk about or against United, we can have that too. Please let us know. Get in touch with us. Get into our socials. Links are given down below in the description. Get involved. Get in contact with us, and we will make sure that you are here with us discussing Manchester United. That's all I want to say. A great win for Manchester United. GGMU guys. Let's kill Atletico now. Good Yep. night. Bye guys. Thank you for joining in.